سوری. دور از رخت سرای درد است خانه من، دور از رخت سرای درد است خانه من. خورشید من کجایی؟ سرد است خانه من. Came in randomly and I was watching the Jungle Book, the Mowgli story. I don't know why, when I was young, I imagined that to be India. I had no idea that it was supposed to be Africa. That's what I thought, that's written about India, that is what India is. And my mom walks in and says, will you go to India? She just says this and walks into the kitchen. And I'm sitting like, is she serious? Like, yes. I came today, 2011. There is something called ICCR, Indian Council for Cultural Relations, and this is an organization about linking cultures together, science together, so that I was accepted as a student to continue PhD here. मेरा शौक है हर जगह को देखने में, हर तरह लोगों के साथ जान पहचान। ये तो मेरा बचपन का शौक था। शायद मेरे को ऊपर वाला कभी दुआओं में सुन रहा था, तो मैंने दुआ किया था बचपन से, इसलिए। दिल्ली इसलिए आया कि मैं बचपन से बाहर के देशों में आदत पड़ गया मुझे इस तरह इजी लाइफ, यू नो, इजी लाइफ, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ पे। I say I'm from Congo. I came in India to study. India to see it. I started my MA in Syria, which was unfortunately not good. I applied to JNU, Jawaharlal Nehru University, which I like a lot. I was very happy. It was like my dreams are coming true, and usually my dreams come true. India wasn't at all planned. That was event. And then I said, let's go. I said, okay, that's the adventure. And the whole purpose of applying abroad was adventure. उधर बहुत लड़ाई है, तालिबान है, दाइश के बंदे, दाइश के नाम वही आ गया। मैं हिंदुस्तान गया, आगे हिंदुस्तान के कोई लड़ाई नहीं, ये बहुत आराम जगह है। क्यों इंडिया ही क्यों? India actually
शायद जब मैंने चूज़ किया कि मैं हिंदी ही पढ़ना चाहती हूँ और मेरी बहन ने एक्चुअली चूज़ किया जैपनीज़, तो जब मैंने ये डिसाइड किया तो मैंने सोचा भी कि हम कुछ अलग करेंगे, ये पश्चिमी भाषा है हम नहीं सीखेंगे। हमने सोचा कि नहीं, हम पूर्वी भाषाओं को ध्यान देंगे, तो मैंने हिंदी चुनी। फिर तो होता है हमारे आर्मेनिया में भी लोग परिवारों में, वो समाजों में क्या बोलेंगे, आप अच्छा भारत क्यों जा रही हो, कहीं जाओ फ्रांस मतलब यूएस है या इधर उधर, मतलब उस बाहर क्यों नहीं जा रहे हो, मतलब भारत क्यों आ रहे हो, भारत में क्या है, वो थोड़े वहाँ सोच है इस तरह का। तो हुआ क्या कि मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे जाना चाहिए भारत, कम से कम अच्छा एक भाषा को पकड़ने के लिए, एक जो इस तरह से वो गद्दी पकड़ने के लिए मुझे यहाँ पे आना चाहिए। तो फिर मैं सिर्फ इसी कारण, पढ़ाई की वजह से। मेरा नाम है अब्दुल रहीम है। हम रोहिंग्या अरकाने बर्मा, हम लोग बुसिडंग रहने वाली है। अभी बर्मा का हालत 1938 तक हमारे जुल्म से खत्म हो रहा, क्योंकि बर्मा में इतना जुल्म हो रहा, ये बोलने में रात ख़त्म हो जाएगा, दिन ख़त्म हो जाएगा, बर्मा का जुल्म का बात ख़त्म नहीं होगा। हमारी बर्मा से मुसलमानों के ऊपर इतना पाबंदी लगा दिया, वो पाबंदी रह नहीं पा रहा है। इसी की वजह से हर जगह पे जाकर फाना लिया है। थाईलैंड में 2% है, मलेशिया में 40% है, पाकिस्तान में 23% है, बांग्लादेश में 23% है, सऊदी अरबिया में 33% है, अदर कंट्री पे 50% अभी फाना लेकर ज़िंदगी गुजार रहा है। There is the experience when you're coming, the first time you are staying, that experience is crucial. What you are living or what you are seeing, that become a point. You come without expectation. Okay, you come empty, and then what you get it, build the foundation for you. Then when you come, you expect that foundation be there, then this is not. And that foundation get disturbed. You get disturbed. My mom said, "Won't you miss home?" I'm like, "No, I'm going to be in India. Why will I miss any of you guys?" And I was like, I'm so going. And I came. But the disappointment was huge. Though it was January, it was humid as hell. We land there and I'm looking for a beach, I'm looking for a jungle, and it opens and that gush of humidity hits you and you're like, no, this is not India. जैसा मैं एयरपोर्ट पे आया तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कि एक जन्नत का टुकड़ा। मैं तो यही माना हूँ अभी तक, यहाँ के लोग, यहाँ के जैसे कि मेरा बचपन से कोई रिश्ता है इंडिया में। So many things, so many, like so many guys, how do I say, speed in the flow. How can I say? So many to throw. Speeding? Yes, too much. But my country never seen before. When you see somebody do like this, I beat him. It's my country. It's impolite to do for anybody. It's so impolite. But in my country, when you think to do like this, you must stay alone to do like this. When you have so many people there, you cannot do like this. This is the first stone. This shock, I will never forget my life. First year, it was really a shocking year because, to be frank, as I told you at that time, Syria at that time is not Syria now. But in 2005, you can see here, you can smell something. You can smell something not pleasant. You will never smell such smell in Syria, frankly. So when I came back, first of the senses, as a human being, you will grasp the environment by senses, by your vision, by your sense of smell. Smell was one of the biggest problem I have got here. Sometimes I was shocked by the garbage on the streets, like having to see people sleeping on the road was something that I used to stop the bike. I used to have Pulsar at that time. Stop the bike really and just look like that and see and feel worried about the human race. What are we doing? How could some person is sleeping on the road and one person is living in a palace? I
understand that. Until now, I'm unable to understand that, frankly. Somebody, all he's doing is selling bel puri. Now, God knows, he might be selling more, he might be selling less. But that's not a dream job that people have. But if you ask him, never will you hear, aise nahi hai, waise nahi hai. He'll be happy. He's happy. How are things? Just smiling randomly. You see it's raining. Photographers, newspapers are reporting it has rained in some place and all that. And the camera rolls and you see people sitting in till, I don't know, their skirts in the rain and they're smiling to the camera. Why would you do that? People come with the different expectation. Mostly come with the expectation of the Bollywood movies. That green land, big green eyes girl, trees which all are huggable. Everyone should sing in a street. They are not talking, they're just singing and dance. They are looking around, where are the dancers? Why there is no dance here? So the expectation is like that. The expectation is different. It's like I come to the airport. The first thing I just remember that I saw was I went for ordering the food in McDonald's, and I ordered aloo tikka. I don't know the name. Like aloo tikki. Huh? And one other Iranian was that he was a senior student. I said, "Oh, you are starting veg," and that was the first time I got the concept of veg. And I just said, "Wow! I just read in a book there is something like vegetarian and non-vegetarian. It was just exist in a book, and I have in my hand. Now there is something was veg, and I just look at that, and that was the first. And then when I come out of the taxi, the street was full of dogs. They are all sleeping. And my thought was, how can I run when they attack? For a week I couldn't walk like straight in a street. I just always cautious they don't attack. We don't have a street dog in Iran. We have a wild dog. So the concept of a street dog is not there. So if there's a dog, either he's attacking you, either there's no dog. But just imagine how much scary was that. At the beginning, I didn't know that I can survive in the other culture. It was my first time come out of the country. हम लोग पहले तो मदद कर था, जहाज भी देता, अभी यहाँ जहाज खाने के लिए मजबूर हो गया, इतना मजबूर है। कितना हालत में हम यहाँ, हम अपनी खुशी से अपने वतन छोड़कर, ये हमारी जो जैसे जुग्गी वगैरह दिखा दे रहा है, ऐसी जुग्गी पे हमारी बैल बकरियाँ गाय भैंस वगैरह नहीं रहता था। हम यहाँ पे एक कुत्ता भी नहीं रहता है। तो हालत मजबूर होकर यहाँ आकर हम लोग फना लिया था। रहने के लिए भी दिक्कत है। आज यहाँ रहूँगी, कल कहाँ रहूँगी हमको पता नहीं, कि हमारा एक जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए। ये बैग बना कर बच्चा पालता हूँ। मेरे 6 बच्चा है, छोटा सा। मैं बच्चा को पढ़ाता, ये बहुत मुश्किल से पढ़ाता। एक बैंक बनाने का 100 रुपया मिलता है 8 दिन में, तो 8 दिन में बच्चा को खर्चा देना पड़ता है। तो मुझे ये बच्चा पालना का बहुत मुश्किल है यहाँ पे। शायद बहुत सारे देशों में मैंने ज़िंदगी किया, मुझे पता है क्या करना है, क्यों, और मेरा मैकेनिक भी हो, डिज़ाइनर भी हो, सब मेरा पूरा विश्वास था कि मैं भूखा नहीं रह पाऊँ, नहीं रहूँगा। सारा गूगल जानता है मुझे, वैसे जो मेरा फीलिंग जो है ना, मैं किसी के साथ प्यार से बात करो तो दिल्ली से सब कुछ प्यार से होता है, दिल्ली पे, क्योंकि यहाँ दिल्ली वाकई दिल वालों का है। मेरा 3 बच्चा है, आप दिखाया था ना, 3 बच्चा है, 10,000 मेरा मकान का किराया, काम नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अफगानिस्तान से लड़ाई, मगर आवाज़ बहुत सही आवाज़ है। The first year I was stupid. I was hanging out with only like Syrian, I did not get too much into my Indian friend. But later on, the next year, I just totally changed. I left that circle. I abandoned that, and I came to the Indian
communication. So swear words, I learned swear words, all of them. First month, it's not polite to use them, so I use them. I felt like it is a small thing. I was buying like dahi, dahi. So I was just seeing the packet, and it just this is, and I was able to read. I felt very happy. It was one of the happiest moments. By the way, people call me I am an Indian, So when I drive in many aspects, and he drive like worse than India. I drive worse than Indian. So I drive on the left side, right side. I go to on the side, walk pavement. I cross. I just okay, bye. If you live in a place which doesn't have things like chole bhature, it doesn't have things like street food, I don't know, even the little chuski that's there, you like everything, you just love everything. Have you tried making egg roll at home? It turns out to be, but if you're eating egg roll from somebody who's making it with his sweaty hands, that's where the taste lies. I still can't understand why would anybody want to live in India, because of the population and the different mentalities that do exist in this country. There's a lot of things that make life a bit hard, which you can easily enjoy. Yes, the roads are dirty, fine. There's a way you can switch that part off in your brain and say, there's a lot more to India and there's more positiveness in India than the negative side. So I don't think why somebody wouldn't ignore the negative parts. बर्मा जाते हैं, बर्मा वाला बोलता है यहाँ का नहीं है। बांग्लादेश जाता, बांग्लादेश में नहीं होता। इंडिया में आया, इंडिया का भी नहीं हो रहा। तो इनिशियल भी जवाब देता, हम लोग कहाँ जमा? And after having grown up in India, they understand the differences, because even when I speak to my brothers back home, there's a lot of differences that we have, inbuilt, because you grew up in a different culture, in a different thing, and you'll ask my brother, I'll ask, why would you do that? And he's like, what do you mean, why would you do that? What if you become an Indian? I'm like, no, but that's wrong, or that's right, and you're not supposed to even care about those things. Because India makes you a little bit laid back. India makes you tension free. The little things that you actually care about, otherwise India makes you like, अरे हो जाएगा. सरकार ने हॉस्पिटल देकर रखा है, वहाँ जाकर कहाँ का है, बर्मा का है, पीछे जाओ थोड़ा 10 मिनट की बात आ जाओ. क्या डॉक्टर हॉस्पिटल में भी इतना फ़र्क होता है क्या? हम कुछ किसी से क्वेश्चन करना है. I was discriminated in the good way. There is no good way in discrimination, but they were very kindly and very friendly. That really I was feeling sometimes not comfortable because of how much they were good. I used to go with them to their villages. I told you that we used to go everywhere. So I'm not stranger. I'm bhai to you, okay, babu. हिंदुस्तान लोग के खराबी इसके एक रिक्शा वाला, ये दुकान वाला अफगान देखे चाहिए अफगानी है. एक चीज़ इंडिया लोग ख़रीद कर दिया, मिसाल टमाटर, मिसाल आलू, केला, सब मेवा चीज़ इंडिया के लोग के दिया वो सस्ता दिया. अफगानी लोग देखे चाहिए अफगानी है, मिसाल 1 दर्जन केला, 12 दाने केला 40 रुपया, 30 रुपया. अफगानी लोग देखिए, अफगानी लोग जब बोल जाए 60 रुपया, 50 रुपये, ये तो सही बात नहीं है. You look like a foreigner or whatever. You look like a foreigner, so they will charge immediately. Like I'm going from here to like house cost 100 rupees. When you speak Hindi, and when he comes to know that you speak Hindi, he will like, okay, this guy knows a lot. It's just everybody is a mix of everything. They're neither there nor here. Just like I feel, I'm neither an Indian or an Armenian. You're in both the places. When you go there, you're not there. When you're here, you're made to. You constantly know at the back of your head you're not from here either. I go back home, it's even weird. जिस तरह से हम यहाँ पे कहते हैं कि अतिथि देवो भवः, वो जो कंसेप्ट है वो मेरे आर्मीनिया जैसी है. मैं हमारे आर्मीनिया में भी मतलब मेहमानों को बहुत अहम दर्जा दिया जाता है कि हमें मेहमान आए हुए तो हम उनको बहुत अच्छे मतलब सेवा करेंगे सब. तो ये एक अच्छा, बहुत मैंने देखा है यहाँ पे, बहुत ही मूल्यवान एक गुण है. अब जैसे क्यों ना लिया जाए शादी ब्याह का वो मोमेंट. हमारे हालांकि हम ईसाई हैं, हमारे धर्म ईसाई है, लेकिन हिंदुओं में भी मैंने देखा है कि शादी ब्याह जैसे शादी के समय जिस तरह से कुछ ऐसे रीति रिवाज है जो हम हमारे बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे
क्या कहते हैं ना कि बहू को मतलब जूता जैसे चुराया जाता है, वही चीज़ हमारा कंसेप्ट भी है यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसा है। ये चीज़ है तो काफ़ी सिमिलरिटी है जब होती है ना, तो आप आत्मीयता होती है। अब जब मैं वापस जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ के लोग इस तरह के क्यों, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझ में भी अब आ गई है ना, तो सोच में भी मानसिकता में भी कहीं ना कहीं बदलाव आया है। यहाँ पे यही मैंने सीखा है कि कुछ हो जाए तो 2-3 घंटे आराम से बैठे रहेंगे, मतलब कुछ नहीं है, कुछ वो नहीं है, मतलब वहाँ पे लेकर आराम से नहीं हो जाएंगे 3 घंटे, कैसे वेट कर सकते हैं, नहीं जाओ जल्दी। नर्वस होना बहुत आम बात है वहाँ के लिए, वहाँ के खासकर मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रही, हर जगह की है। यूरोप की बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी एकदम गर्म हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे वो सीखा है किस तरह से शांति बरतनी रखनी। हाँ, एक आशावादी सोच अपनानी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे सीखा है। अपने देश का वो है, मतलब लगता है ना कि अपना देश अपना जान जैसा है, बहुत वो जुड़े हैं। और लेकिन ऐसा कभी अब ऐसा लगता है कि हाँ एक देश में कभी मतलब नहीं रह पाएंगे, सिर्फ एक देश में, मतलब मुझे लगता है आना जाना रहेगा, एक देश में टिके रहना मुझसे संभव नहीं है। First, you feel belong to that birthplace. So I feel belong that I'm a Syrian person. I feel belong to Syria, first of all. However, anything happens in India, I feel very bad to know anything bad happens here. I feel there is a connection with India, and whenever someone will say anything against India, I don't allow him. I'm very good in writing complaints. Really, whenever someone will do something wrong, I feel that he is against India here. That how you do that? So I will write complaint against him. He is not a good employee. He's doing that. He's doing this, just like that. Because I love India also. That is the reason. I'm not that much in big favor of the political border. I don't believe that people should be keep only in one being that political border or the nationality or that. I am against all of that. I feel that's the only political approach to the human being, which is not the full approach. The human being much more. वो एक फराह दरिया का गाना है जो अपने देश से थोड़ा दूर जाके ये गाना गा रहा था। आपसे दूर रहकर मेरा घर बहुत ठंडक है, ये बहुत जब आप दूर रहते हो मेरे से, तो मेरा घर खाली सा लग रहा है। खुर्शीद मन कुजोई मेरा सॉन को समझ गए जो धूप तुम कहाँ हो, मेरा सॉन तुम कहाँ हो मन دور از رخت سرای درد است خانه من خورشید من کجایی سرد است خانه من خورشید من کجایی سرد است خانه من